Hi all, very good afternoon. Welcome to the session with LearnFatafat. तो आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर इन साइंस दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो this chapter is from class 10 CBSE बोर्ड साइंस टेक्स्ट बुक एंड टर्म 2 का ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 13. ओके, तो वी विल बी स्टार्टिंग दिस चैप्टर टुडे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसके पहले ही हमने एक चैप्टर देखा था जिसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में काफी कुछ देखा था एंड वी हैड सीन वन another effect of electric current in that previous chapter. Do you know कौन सा देखा था हमने? Can you tell me? Hi Kitishri. Hello. कैसे हो? And after a long time. Yes. So I hope all is good. तो अगर करंट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट की, सो वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में एक इफेक्ट देखा था हमने इलेक्ट्रिक करंट का. यू नो कौन सा इफेक्ट देखा था? सो वी हैड सीन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ प्रीवियस चैप्टर कि बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर, इन द रेजिस्टर, रेजिस्टेंस की वजह से जो हीटिंग होती है, जो अवन, टोस्टर, ये सारी हीटिंग एलिमेंट्स में, हीटिंग डिवाइसेस में, आयरन वगैरह में यूज होता है. सो दैट वाज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. बट नाउ वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर जिसमें हम पढ़ेंगे एक और इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. कौन सा? दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. दैट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर. यस यस. तो बच्चों, आप कोई भी क्लास के हो, it doesn't matter if you're in class 10 or class 9 or even in higher classes. So if you're interested in this topic, आपको इस टॉपिक की नॉलेज चाहिए तो आप जरूर ये सेशन देखो. There is nothing to stop you. Okay. Yes, concept is same. You're right, Kitishri. सही है. Okay. And actually if you see हर क्लास में आप सेम टॉपिक या सेम कॉन्सेप्ट पढ़ते हो. सिर्फ जो लेवल होता है वो थोड़ा हायर या लोअर हो जाता है डिपेंडिंग ऑन योर क्लास, isn't it? ओके, सो लेट अस सी इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस, हाउ डज इट क्रिएट, ये क्या होता क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट, और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स सी. And for such more topics and more animated videos, एक कोई भी टॉपिक है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस टॉपिक का एनिमेटेड वीडियो देख सकते हो लर्निंग ऐप पे, हमारी लर्न फटाफट लर्निंग ऐप पे, जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो. एंड नॉट ओनली फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स, यू हैव टू you can be any student from class 1 to class 12. क्लास 1 टू क्लास 12 से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको हमारी लर्निंग ऐप पे मिल जाएगा. ओके, सो एंड आपको सिर्फ आपका बोर्ड भी जो है वो भी कोई भी बोर्ड आपका होगा वो आप सिलेक्ट कर लेना, क्लास सिलेक्ट कर लेना, एंड देन बोर्ड सीबीएसई बोर्ड है तो यू कैन सिलेक्ट सीबीएसई, और इफ देयर सम अदर स्टेट बोर्ड तो यू कैन सिलेक्ट दैट, ताकि आपको अपना रेलेवेंट स्टडी मटेरियल लर्निंग ऐप पे मिल जाए. There will be lot of animated videos. बहुत छोटे छोटे वीडियोस, अराउंड 5 मिनट्स का वीडियो है एक वीडियो, जिससे आपको टॉपिक एनिमेटेड फॉर्म में आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा एंड याद भी काफी ज्यादा टाइम तक रहेगा. सो यूज दिस फीचर फॉर श्योर. लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस सेशंस, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद ट्यूटर्स इन द क्लास. लाइव क्लास में भी अभी जैसे आप चैट में करते हो लाइव स्ट्रीम में, वैसे ही लर्निंग ऐप पे भी लाइव क्लासेस हैं. ऑफलाइन डाउनलोड्स है स्पेशली फॉर पीपल हु हैव इंटरनेट इश्यूज, उनके लिए एक बहुत अच्छा फीचर है ये, बिकॉज यू कैन सी योर वीडियोज विदाउट यूजिंग इंटरनेट वाईफाई जो बफरिंग होती रहती है. दैट विल नॉट हैपन इन दिस ऑफलाइन मोड. So do visit our website also, learnfatafat.com.
और ये लर्निंग ऐप तो कर ही लो। यहाँ पे आपको चैट सपोर्ट दोनों जगह पे मिल जाएगा। इफ यू वांट टू chat or send some message to LearnFatafat team, so that you can do. So I hope you will make full use of our learning app. And now let's start with our topic for today. तो इस चैप्टर में we will start this chapter with our first topic, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है and what are magnetic field lines. So let's begin. तो आई विल शो यू द रेलेवेंट इसका वीडियो देखते हैं एंड देन आई विल एक्सप्लेन टू यू उसी में कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड्स। ओके, सो ये है हमारा टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका मीनिंग जो है, मेन मीनिंग इसके नाम में ही है। सो आई होप व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस नेम। इन दिस नेम itself is written that electric current, if there is electric current, then it will produce a magnetic effect. तो just to be little more, इसको मैं easy अगर बताऊं आपको, तो अगर if there is some wire, ठीक है, कोई भी वायर, let me draw a circuit, wait, हम एकदम ही simple circuit बनाते हैं। तो इस सर्किट डायग्राम में अगर ये मेरी वायर है, बैटरी है, कोई भी स्विच हम यूज कर लेते हैं। अगर हम स्विच को क्लोज करते हैं, when I close the circuit, तो current starts passing through this wire, and ये जब current पास हो रहा है वायर में, this electric current is also producing some magnetic effect। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ये कैसे मालूम पड़ेगा आपको? इफ यू प्लेस अ मैग्नेटिक नीडल, जैसे कि कंपास में होती है मैग्नेटिक नीडल, वो अगर आप यहाँ पे इस वायर के आसपास कहीं रखोगे, तो दैट नीडल विल शो यू सम डिफ्लेक्शन। और नीडल डिफ्लेक्ट कब होगी? ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप कंपास को किसी और प्लेस पे रख दोगे, तो वो डिफ्लेक्शन वैसी नहीं दिखाएगा जो इस वायर के पास दिखाएगा, जिसमें करंट पास हो रहा है। ओके, लेकिन हाँ, इफ यू स्विच ऑफ द करंट, देन यू विल सी नोटिस कि ये जो डिफ्लेक्शन आपको दिखी थी, फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसी डिफ्लेक्शन थी, तो ये डिफ्लेक्शन वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे चली जाएगी कंपास की नीडल, मैग्नेटिक नीडल, देन देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कुछ समझ में आया? इसका बेसिक मीनिंग यही है। इस चैप्टर में हम और भी क्या पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा और फॉर्मली पढ़ते हैं। तो ये देखो, जैसे मैं सर्किट मैंने दिखाया था आपको। दिस इज अ सर्किट एंड समझो कि यहाँ पे दिस एक्स वाई ये जो दिखाई है, ये एक वायर, दिस इज अ वायर एंड ये बैटरी करंट। नाउ व्हेन द स्विच इज ओपन स्विच में तो ऑब्वियसली करंट पास नहीं हो रहा, सर्किट कंप्लीट नहीं है ना। तो इस पोजीशन में इफ यू कीप अ मैग्नेटिक नीडल, ये देखो, जस्ट लुक एट द पोजीशन ऑफ दिस नीडल, मैग्नेटिक नीडल, एंड नाउ लेट्स सी कि अब इस मैग्नेटिक नीडल को देखो। डिड यू ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड? जब हमने ये स्विच क्लोज किया, तो वायर में करंट पास हुआ, एंड बिकॉज देयर वाज दिस करंट, ये जो मैग्नेटिक, सी आई शो यू अगेन, थोड़ा ध्यान से ये मैग्नेटिक नीडल को देखना, ठीक है, कि ये डिफ्लेक्ट हो रही है। अगेन आई विल शो यू द ओपन सर्किट एंड देन यू नोटिस कि क्लोज सर्किट जब होगा तो ये नीडल को क्या हुआ। ठीक है, सो लेट्स सी अ लिटिल, यहां से देखो, सी हियर द नीडल इज इन व्हाट डायरेक्शन, लेट मी शो यू। ये है इस डायरेक्शन में, ओके, लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लेसिंग दिस एंड एरो आई एम शोइंग यू। नाउ लेट्स सी, जब ये करंट पास होगा तो इस नीडल का क्या होगा। सो डिड यू ऑब्जर्व हियर व्हाट हैपेंड? अब देखो नीडल किस तरफ अलाइंड है। सो वी ऑब्जर्व के ये नीडल में, मैग्नेटिक नीडल में देयर इज सम डिफ्लेक्शन। ये क्यों हुआ डिफ्लेक्शन? बिकॉज देयर इज अ करंट पासिंग थ्रू दिस वायर। सो दैट्स वाई ये जो मैग्नेटिक नीडल है, या अगर आप कंपास भी रखोगे तो उसमें जो मैग्नेटिक नीडल होगी वो होगी डिफ्लेक्ट। ओके,
एंड सबसे पहले ये प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की थी ऑस्टर ने, ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर ने. सो this was way back in 1820, around 1820 ये इफेक्ट देखा था ऑस्टर ने when he was doing an experiment on electricity. ओके, यू नो बहुत सारी जो इन्वेंशंस हैं, जो स्टडीज हैं, वो एक्सीडेंटली आ जाते हैं, एक्सीडेंटली दे डिस्कवर सम थिंग्स. सो हियर आल्सो द सेम थिंग हैपेंड. तो सर हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर ही वाज परफॉर्मिंग सम एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, और ऐसे उन्होंने, ये सर्किट था उनका, और एक कंपास कहीं पे उनका पढ़ा था टेबल पे, जैसे फॉर एग्जांपल एट दिस पोजीशन. सो जब तो करंट पास नहीं हो रहा था तो कंपास की नीडल का कुछ डिफ्लेक्शन था, मे बी लाइक दिस फॉर एग्जांपल. एंड एज सून एज ही पास्ड करंट थ्रू द सर्किट, कंपास का साइज सेम रहेगा, हाँ, आई डोंट नो व्हाई आई एम ड्राइंग इट सो बिग. तो एज सून एज ही पास्ड करंट थ्रू द वायर, उन्होंने नोटिस किया दैट ये डिफ्लेक्शन दिखा रहा था कंपास. So that's when it was discovered that electric current has a magnetic effect. और इसको एक वर्ड में हम क्या बोलते हैं? What is it called? This is the new branch which came into existence known as electromagnetism. Okay, clear? So let's see now. अभी आपको ये तो समझ में आ गया कि क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सिंपल है. ओके, सो इसके लिए आपको क्या चाहिए? सिर्फ करंट कैरिंग वायर चाहिए. इन एनी करंट कैरिंग वायर देयर विल ऑलवेज बी अ मैग्नेटिक फील्ड. एंड इफ यू आर वंडरिंग कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, तो दैट आल्सो वी विल सी. बिफोर दैट, यू नो, इन एवरी मैग्नेट, फॉर एग्जांपल कोई भी बार मैग्नेट ले लें हम, तो उसमें मैग्नेटिक पोल्स होते हैं. दो पोल होते हैं. वन इज द नॉर्थ पोल एंड वन इज इट्स साउथ पोल. ठीक है. एंड सिमिलरली ऐसे अर्थ में भी देयर इज अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल. बट द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है वो साउथ पोल, अर्थ के साउथ पोल की तरफ होता है. यू नो व्हाई? बिकॉज one reason can be because opposites attract and then earth also rotates and keeps on changing the position. वो भी है. So magnetic north pole is near the south pole and vice versa. Okay, now let's see कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ी है इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है ये पहले हम देखते हैं. ओके, यस. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है पहले तो. नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज, now if you see, let's go back to our diagram, the circuit diagram. यहाँ पर. तो अगर ये जो नीडल है मैंने यहां से उठा के यहाँ पे रख दी, ठीक है, एट दिस प्लेस समवेयर फार अवे, इफ आई कीप द नीडल, एंड देन फिर से मैं यही देखूं कि मैं करंट पास कर रही हूँ, तो विल देयर बी सम डिफ्लेक्शन. अगर हमने एक ऐसी थोड़ी सी दूर रख दी इस नीडल को, तो वहां पे इसका इफेक्ट नहीं ऑब्जर्व करेंगे. देयर विल बी ओनली अ पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर बाउंड्री होगी इस वायर के आजू बाजू, जिस बाउंड्री के अंदर यू विल एक्सपीरियंस दिस इफेक्ट, दिस मैग्नेटिक इफेक्ट. ओके, एंड दैट एरिया where this force is experienced, this effect is experienced, उसी को बोलते हैं. So this region, for example, will be known as a magnetic field. Or you say, if I say this region is known as magnetic field. अगर मैंने नीडल को इस रीजन के बाहर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी रख दिया, then this will not show any deflection. करंट आप पास करो या करंट को ऑफ करो, it will not show any deflection. क्यों? क्योंकि ये इस एरिया के बाहर रख दी हमने. So that is not experiencing the magnetic effect of this electric current passing through this wire. ठीक है? Okay, so this is what is magnetic field. So magnetic field, and now let's see, इसको हम एक और एक्टिविटी देखते हैं, एक्सपेरिमेंट देखते हैं. If you have some, अगर हमारे पास कुछ, ये देखो, on a white paper you place a bar magnet,
ठीक है, लेट मी शो यू। ये समझो हमने बार मैग, आई यूज अ डिफरेंट कलर, पिंक यूज कर लेते हैं। तो ये मैंने बार मैग्नेट रखा, नॉर्थ और साउथ पोल है उसका, ठीक है। तो ये नॉर्थ और साउथ लिखा नहीं होता है, so but every magnet has a north and south pole. So north and south pole है, and then in on this piece of paper what you do, थोड़े से इस पे आयन फाइलिंग इस पे छिड़क दो, ओके, जस्ट स्प्रेड देम, spread some iron filings evenly on this piece of paper. एंड इसके अंदर बार मैग्नेट तो रखा ही हमने सेंटर पे, और उस पे आयन फाइलिंग्स छिड़क के आफ्टर दैट व्हाट विल वी डू, यू कैन यूज अ लाइक सॉल्ट स्प्रिंकलर, यू नो, एक ही जगह पे सारी आयन फाइलिंग्स नहीं डाल देनी है, हमें उनको इवनली स्प्रेड करने की ट्राई करना है। तो मे बी यू कैन यूज समथिंग लाइक अ सॉल्ट स्प्रिंकलर। सो आयन फाइलिंग्स को जस्ट स्प्रेड कर दिया, उसके बाद जस्ट जेंटली टैप द पेपर, ओके, जस्ट गिव अ जेंटल टैप। तो उससे क्या होगा, ये आयरन फाइलिंग्स रीअरेंज कर लेंगी अपने आप को, दे आर गोइंग टू फॉर्म ए सॉर्ट ऑफ अ पैटर्न। एंड व्हाट इज दिस पैटर्न गोइंग टू टेल अस, इस ई पैटर्न को पढ़ के वी विल बी लर्निंग अबाउट द properties of the magnetic field lines, you know, properties of magnetic field, properties of field, what are field lines? Now you understood कि magnetic field क्या होती है, पर magnetic field lines क्या होती हैं? If you are thinking about this question, so let me tell you, magnetic field lines are just the representation. They will just show you where and how your magnetic field is. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यू नो, यहाँ पे हमें ये दिख रहा है बार मैग्नेट, यहाँ पे जो पैटर्न में ये जो आयन फाइलिंग्स ने अपने आप को अरेंज किया है, सो ऑल दीज लाइक लाइंस, यू नो, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो दिखा रही हैं, दे आर शोइंग, दे आर रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस मैग्नेट, ओके। सो लेट अस सी इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज अब हम पढ़ते हैं। What are the main properties? And this is a very important question in your exam. ये पूछते ही हैं properties of magnetic field lines. ठीक है? So let's see what are the properties. So तो ये जो पैटर्न फॉर्म हुआ है, I told you this is a magnetic field lines. So अगर हम इनको ड्रॉ करने की ट्राई करें, and there is another method by which you can find डायरेक्शन। अभी इसमें ये जो एक्टिविटी थी, एक्सपेरिमेंट हम अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन नहीं पता लगेगा कि फ्रॉम वेयर दे आर स्टार्टिंग एंड फ्रॉम वेयर टू वेयर दे आर गोइंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये एक 1 मिनट कहाँ गया कलर, आई यूज दिस वन, इफ आई टेक दिस वन पर्टिकुलर पैटर्न, ओके, वेट या ओके, सो लेट अस टेक ये जो है ये वाला, ये एक लाइन अगर हम देखें अरेंजमेंट, तो मुझे ये तो दिख रहा है अरेंजमेंट, लेकिन आई डोंट नो कि ये यहां से इस तरफ जा रहा है या साउथ से नॉर्थ जा रहा है या नॉर्थ से साउथ, दिस आई डोंट नो फ्रॉम दिस एक्टिविटी। तो डायरेक्शन पता करने के लिए वी कैन डू अनदर एक्टिविटी, एंड देयर वी विल सी के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हम बना सकते हैं। यू कैन टेक अ बार मैग्नेट एंड प्लेस द कंपास नियर इट, ओके। अब ये कंपास एक डायरेक्शन दिखाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये जो हमने यहाँ पे रखा, तो फॉर एग्जाम्पल दिस इट इज शोइंग द नॉर्थ, दिस साइड द डिफ्लेक्शन ऑफ द जो रेड पार्ट होता है नीडल का, दैट शोज यू द नॉर्थ डायरेक्शन, ओके। तो ये ऐसे दिखाया, ऐसे हम कंपास की पोजीशन 1 मिनट ये क्या चेंज करते रहेंगे, we'll keep it at different positions. So when I kept it here, it is showing the north pole this side, and now I will pick up the compass from here and मैं उसको रखूंगी एक दूसरी प्लेस पे, such that ये जो नॉर्थ था पहले वाला नॉर्थ पॉइंट, अब मुझे कंपास का साउथ यहाँ पे रखना है, ठीक है। ऐसे मैं कंपास को रखूंगी हमेशा हर पॉइंट पे, जो पहले वो नॉर्थ दिखा रहा था, फिर नेक्स्ट टाइम कंपास का साउथ यहाँ पे होना चाहिए। सो आई विल सी नाउ
the north is showing this side. ठीक है, ऐसे I will keep on changing the position of the compass. So let's see, ये second position है, उसके बाद एक third position होगी, and like this. See, these are the different positions of the needle. And यहाँ पे हम देखेंगे ये इस तरफ, this is showing the direction this side. So we can see ये आगे भी ये यहाँ पे this will show here, and like this will be my directions of the compass needle. And when you finish this activity and we draw the magnetic field line, if I want to join all these, then मुझे इसकी, let me show you the diagram of the field lines which we will get. Yeah, so we will get the field lines like this. Okay, 1 minute, let me see अगर यहाँ वाला भी, yeah. So this will be the pattern of field lines. जो आयरन स्प्रिंकल किया था हमने, उसमें भी हमें ये पैटर्न ऑफ लाइंस मिला था, और जो हमने सेकेंड एक्टिविटी की उसमें हमें डायरेक्शन मिल गया ऑफ द फील्ड लाइंस. सो वंस यू मेक दिस ड्राइंग, अब इस ड्राइंग से हम फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पता कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की. सो लेट अस सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज. सो फर्स्ट property is what is the about the direction. So when you see this diagram, what can we see direction के बारे में, कि अब ये देखो 1 2, this is coming from here and it is going this way. Again ये यहाँ से यहाँ. तो what do we see here? ये जो सारी magnetic field lines है, they are starting from the north and they are ending at the south pole. North से start होती है, south में जाती है. नॉर्थ से हमेशा बाहर आ रही हैं फील्ड लाइंस. सो व्हाट डू वी से, दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज emerge from the north pole. Okay, even if you see here, यहाँ पे भी ये जो दो दिखाई हैं ये भी emerging from the north pole है, and they merge at the south pole. ये देखो emerge और merge में there's the only difference is of E, but the meaning is exactly opposite. ठीक है, emerge means they are coming out, they emanating from the north pole, and merge means they are meeting or they are entering the south pole. So that is the first important property of magnetic field lines. Okay, so let's see the second one. Second property is about the कंटिन्यूटी. तो ये जो हमने पहले डायरेक्शन पढ़ा था, यानी कि emerging from the north and merging at the south, ये होता है outside the magnet. Outside the magnet, pattern of field lines is like this. But what about the field lines inside the magnet? So does it mean कि अंदर कुछ है नहीं field lines? ऐसे सिर्फ अचानक बाहर नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ पे एंड हो जाती है. इज इट लाइक दिस? सो नो, इट इज नॉट लाइक दैट. इफ आई वांट टू कंप्लीट, ये देखो ये वाली जो है, दिस इज लाइक दिस अंदर है ये पार्ट. सो ये एंटी क्लॉकवाइज है, यू कैन सी एंटी क्लॉकवाइज, एंड हियर इट इज इन दिस डायरेक्शन. लेट मी शो इन ब्लैक. ब्लैक में दिखाती हूँ. सी द एरो हियर. अंदर ये मैग्नेट में कहां से कहां जा रही है, यू कैन सी इनसाइड द मैग्नेट. लेट मी ड्रॉ अनदर वन एंड शो यू. इफ दिस इज द सेकंड वन, ओके, आउटसाइड द मैग्नेट वी कैन सी इट इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. लेकिन इनसाइड द मैग्नेट, वेयर इज इट गोइंग? इनसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रैवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ठीक है, सो साउथ टू नॉर्थ ये डायरेक्शन होगा इनसाइड द मैग्नेट. So this is clear. This is clear about the magnetic field line. Two things are clear. Outside the magnet, north to south. Inside the magnet, south to north. So what does this mean? ये complete एक loop form कर रही है.
isn't it? They are in continuity. They form a loop. कहीं से भी they are not broken. Okay, and that itself is our second property. That is about the continuity about the magnetic field lines. So the field lines are continuous, या we can say they form the closed curve या फिर closed loops. Then let us see third property क्या है. Third property है about the strength of the magnetic field. तो सिर्फ अगर हमारे पास ये पैटर्न है अबाउट द ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है या कहाँ पे वीक है? So yes, that also we can decide. And how can we say that? Strength of the magnetic field lines, ये हमें पता लगेंगी from the closeness, how close or how far the field lines are. ठीक है? So if you see in this diagram, you will see okay. So you will see के yes. तो एक मिनट, I will show you the previous one. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं strength. How will we identify? Whenever the field lines are close to each other, then it means कि वहां पर जो magnetic field है वो strong है. And when they are far away from each other, then the magnetic field lines are, magnetic field is weak over there, not lines. ठीक है, magnetic field lines. So see, यहाँ पे whenever you observe, ये पोल के पास आते आते ये सब एकदम they come close to each other. All the magnetic field lines are closer near the poles. So what does this tell us about the magnetic field? Magnetic field जो है poles पे हमेशा stronger होती है compared to at the center. ठीक है, और ये हमें कैसे पता लगा? From the pattern of magnetic field lines. Okay, so that is the third property. And now let's see the fourth property here. Magnetic field lines will never intersect each other. ये हुई इसकी fourth important property. तो अगर ये देखो, जैसे ये यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है हमें, यहाँ पे they have shown the magnetic field lines are intersecting each other, but that is not possible. क्यों? क्योंकि अभी मैं अगर ये एक magnetic field line लो यहाँ से यहाँ, it is traveling here, so this is its direction. Okay, now if I see, okay Yogesh, yes, thank you for the compliment. If we see this field line, okay, let us consider कि अगर दो field lines intersect कर रही हैं, एक यहाँ पे है और दूसरी यहाँ पे, ऐसे अगर intersect करेगी तो क्या होगा? So at one point, ये जो point of intersection है, यहाँ से हम देखेंगे कि magnetic field के दो डायरेक्शन हो जाएंगे. तो if I keep a compass here, तो magnetic field ये जो नीडल है ये कहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखाएगी? यहाँ पे इस तरफ या इस तरफ? Where will it deflect? It cannot keep fluctuating ना, एक पॉइंट से एक ही magnetic field का डायरेक्शन होना चाहिए. So that's why we say that lines will never, magnetic field lines never intersect each other. Okay, that is your fourth property, and these were all the main properties जो हमें पढ़नी थी about magnetic field lines. So I hope you understood the topic of magnetic field, not the full chapter. चैप्टर का तो ये पहला टॉपिक था. तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? We have studied about magnetic field. Just to recap, magnetic field क्या होती है? Magnetic field है वो फोर्स, ओके, दैट एरिया अगर ये वायर है कैरिंग करंट, तो दैट एरिया, बिकॉज वी आर स्पीकिंग अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट्स आई एम टेलिंग यू. अगर ये वायर या फिर इफ यू हैव अ मैग्नेट आल्सो, तो देयर विल बी अ पर्टिकुलर एरिया, अ पर्टिकुलर रीजन, एन एनक्लोज्ड रीजन जिसमें ये मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा. दैट पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज अ मैग्नेटिक फील्ड.
And what are field lines? Field lines are the representation of the magnetic field, and field lines की properties भी हमने देख ली. ठीक है, clear? North to north repulsion, south, yes, that's right. Like poles, likes will repel, like north and north will repel, and south will repel, and north and south will attract. वो एकदम right है. That's good. Okay, तो अब if you have understood the topic, फटाफट हम इस पे एक क्विज कर लेते हैं. Just to refresh, to recap जो भी हमने पढ़ा है. Okay, so let us see the first question here. Okay, so this is a question. Magnetic field has direction, magnitude, both of these or none of these. What do you think is the correct answer? तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे आप ऑप्शन सोच सकते हो. मैग्नेटिक फील्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड के पास क्या होता है? डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड, बोथ ऑफ दीज, या कुछ नहीं होता है. डायरेक्शन तो ऑब्वियसली होता है, दैट वी हैव सीन इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना. नॉर्थ से साउथ हमेशा जाती है, तो डायरेक्शन तो है ही. व्हाट और मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड यानी कि वी क्या स्ट्रॉन्ग होती है मैग्नेटिक फील्ड, wherever the field lines are close together, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, और जहां पे दे आर फार अवे, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इज वीक. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हियर? व्हिच ऑप्शन इज राइट? सो वी विल से डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ. तो बोथ ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, दिस इज क्लियर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. ओके, yes, this is the next question. I'll read the question अगर दिख नहीं रहा है, because I think it may be a little small for you, but let me see if I can. Okay, yes, I think now you can see it. चलो, so question है, in which case the magnetic field will be stronger? हाँ, तो ऑप्शन A and B. So योगेश, you सी जो था वहां पे both of these दिया था ना, वो करेक्ट ऑप्शन था. ओके, so let's see here what is the correct answer here. In which case the magnetic field will be stronger? अभी अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने इसका आंसर बताया था. Magnetic field lines are closer and crowded, या फिर when the field lines are wider and loose, या फिर will be the same in any case whether the field lines are close or far away, या none of these. What's the correct option? Magnetic field stronger कब होगी? Yes, presentation needs to be improved, that is right. But right now क्या है, there is a little limitation है resources की. Okay, थोड़ा सा, that's why it is like this, and it definitely needs to be improved, that's true. चलो, for the timing, but we are doing with this as much as what is available. So magnetic field lines will be stronger, magnetic field will be stronger when the field lines are closer and crowded. ये हमने property में पढ़ा था. If the field lines are wider and loose, then the field will be weak in that place. ठीक है, clear? चलो next question देखें फिर. Okay, third one. What is true about magnetic poles? So I know you already know the answer to this question. एकदम बहुत ही general question है. Unlike poles attract and like poles repel, or like attract, या फिर magnetic poles attract like as well as unlike poles, or none of these. So what is true? Which is the correct option here? Yes, unlike poles attract and like poles repel each other. That is the correct option. Okay. Next one is the region around the magnet in which magnetic force is observed. तो ये हमारी डेफिनेशन है. किसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी अभी? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, या नन ऑफ दीज.
So region around the magnet in which magnetic forces observed, this is known as the magnetic field. Okay. And next one is, which of the following is not a property of magnetic field lines? तो field lines की properties तो हमने देखी है. Now we have to choose which of the following is not a property. So first is, magnetic field lines have both magnitude as well as direction. Magnetic field lines could be discontinuous. Magnetic field lines never cross each other. Yeah, none of these. Which one is not a property? They are both magnitude and direction. ये तो सही है, true. They can be discontinuous. Discontinuous हो सकती है क्या lines? No, we have studied they are a closed curve, closed loop form करती हैं. They are continuous. तो ये वाला wrong है option. They never cross each other. ये भी true है. They never intersect. And none of these नहीं. तो not a property कौन सी है? Second one, that they can be discontinuous. This is incorrect, right? This is not the property. And let's see the last question here. So the north pole of compass needle points in, points in the dash direction, and south pole points in the dash direction. North pole of the compass needle कौन से direction में point करता है? So compass use करते हैं. Compass, someone in the very olden days, जब और कुछ advanced नहीं था direction दिखाने के लिए, तो compass ही use करते थे ना. Travelers forest में, now also forest में, या फिर some places where you don't have the high technology to see the direction, वहां पे compass use करते हैं. तो north pole of the compass needle किस डायरेक्शन में पॉइंट करता है? नॉर्थ पोल नॉर्थ में पॉइंट करता है, एंड साउथ पोल पॉइंट्स इन द साउथ डायरेक्शन. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. Okay, so this was the last question, and this sums up today's class. So I hope you have got an idea of what is magnetic field and how it is represented, magnetic field lines और उसकी properties. So thank you for watching, and we will see the next session of this chapter on Saturday, same time. Okay, Saturday, same time. And Friday, we will do maths, surface areas का chapter continue करेंगे कल. Okay, so please take good care of yourself and have a nice day.